बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल्स की एक सीरीज़ शुरू कर दी थी, तो आज उस सिलसिले में एक नई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट MCQs हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है वॉकी टाकी ऑपरेट्स इन डैश सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सेमी डुप्लेक्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में ट्रांसमिशन जब होती है तो एक टाइम में दोनों तरफ से होती है, लेकिन ट्रांसमिशन एट अ टाइम एक ही तरफ से होती है। सेंडर और रिसीवर, अगर ए सेंडर है बी रिसीवर है, तो अगर ए मैसेज सेंड करेगा तो बी उस टाइम उसको सुनेगा। जब बी मैसेज ए को सेंड करेगा तो ए उसको उस वक्त सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोलिंग द फेज इज रिफर्ड एज मॉड्यूलेशन, हाफ मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, फेज मॉड्यूलेशन। कंट्रोलिंग द फेज इज रिफर्ड एज फेज मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है a multiplexing technique based on sampling, FDM, TDM, SDM, FM। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, TDM। A multiplexing technique based on sampling is TDM, time division multiplexing। नेक्स्ट है an example of FDM is broadcast radio, टेलीफोन, मशीन्स, सेमी डुप्लेक्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ब्रॉडकास्ट रेडियो। एन एग्जांपल ऑफ FDM इज ब्रॉडकास्ट रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मॉड्यूलेशन टेक्निक दैट इम्प्रूव्स चैनल बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन। ऑप्शन हमारे पास है डायरेक्ट मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, मल्टीप्लेक्सिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मल्टीप्लेक्सिंग। अ मॉड्यूलेशन टेक्निक दैट इम्प्रूव्स चैनल बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन इज मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग द फ्रीक्वेंसी इज रिफर्ड एज डैश फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, हर्ट मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कंट्रोलिंग द फ्रीक्वेंसी इज रिफर्ड एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है अ टेक्निक दैट एलोकेट टाइम स्लॉट डायनामिकली इज TDM, WTM, डायनामिक TDM, स्टैटिस्टिकल TDM। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्टैटिस्टिकल TDM। अ टेक्निक दैट एलोकेट द टाइम स्लॉट डायनामिकली इज स्टैटिस्टिकल TDM। नेक्स्ट क्वेश्चन है topology that involves tokens is star, ring, bus, daisy chaining। करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, रिंग। रिंग टोपोलॉजी में दोस्तों टोकन यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोनेंट्स यूज फॉर इंटरकनेक्टिंग डिसिमिलर नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, स्विचेस, गेटवेज, राउटर्स, ब्रिजेस। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गेटवेज। कंपोनेंट यूज फॉर इंटरकनेक्टिंग डिसिमिलर नेटवर्क्स दैट यूज डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज गेटवेज। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स दैट ऑपरेट्स एट द नेटवर्क लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज स्विचेस, सर्वर्स, राउटर्स, गेटवे। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, राउटर्स। Components that operate at the network layer of the OSI model is routers। Next है in this technique there is no direct contact between user and their program during execution, time sharing, batch processing, system processing, message passing। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसमें ऑप्शन बी, बैच प्रोसेसिंग। इन दिस टेक्निक देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन यूज़र एंड देयर प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इसको क्या कहते हैं, बैच प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है
Any computer that can access the server is called web server, web browser, user, web client. Correct option option D, web client. Any computer that can access the server is called web client. Apache is a type of dash, transmission control program, web server, web browser, DBMS. Correct option option B, web server. Apache is a type of web server. Next है PDU stand for protocol data unit, professional data unit, protocol distributed unit, professional distributed unit. Correct option है option A, protocol data unit. PDU stand for protocol data unit. Next है the generation based on VLSI, very large scale integration microprocessor, is first generation, second generation, third generation, fourth generation. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, फोर्थ जनरेशन. द जनरेशन बेस्ड ऑन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर इज़ बेस्ड ऑन फोर्थ जनरेशन. और दोस्तों फोर्थ जनरेशन का जो ड्यूरेशन है वो 1972 टू 1990 है. नेक्स्ट है द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर. ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी. नेक्स्ट है बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, फर्स्ट जनरेशन. बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन. Next है a layer which is the binary data protocol layer is stub layer, skeleton layer, remote layer, transport layer. Correct option है option D, transport protocol. A layer which is the binary data protocol layer is transport protocol.